Iram, I just saw your film. It's very interesting, especially इसकी जो एक cinematic feel है इसमें. Was it shot on 35 or? No. It was shot in high definition, but we used a mini 35mm lens so as to give it a filmic sort of a... It does give that kind of space. वो सारा जो feel है उसकी वो 35 की है. और it's very nicely shot, very beautifully. It's visually very interesting. The imagery is very nice, and the characters, family characters, बड़े very well done. Except a few. जो आपका अमेरिकन है वो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल unconsciously you overact wanted him to act in a way, you know, nervous way maybe. Yeah, He doesn't come across, you know, very powerfully, I mean, as the other characters do. yeah. तो इसकी story जो थी actually it looks like that you're trying to sort of interpret the Iraq war in human relationships or Do you know, not just the Iraq war, I think wars in general, मतलब कि जो futility होती है war की और जो impact होता है हमारे culture पे socially, जंगों का मतलब कि cultures mix करते हैं, foreign एक दूसरे को समझते नहीं है, जाहिर सी बात है जहाँ लड़कियाँ होंगे different cultures के वहाँ attraction भी होंगी, वहाँ क्या issues होते हैं, misunderstandings, misinterpretation of different cultures. I guess, yes, it is definitely an interpretation on the futility of this war. This war in particular and wars in general, yeah. Did you shoot it in Iraq? I mean, it looked like the whole... Well, see, that's a compliment because no, that was the hardest thing because in a limited budget, we had to recreate Iraq in Los Angeles. So, given that it's a little dangerous to shoot in Iraq these days, we shot in Los Angeles. We built stage. हम फिल्म स्कूल में ही था, हमने स्टेज बिल्ड किया था 4 दिन लगा के, मैं और मेरे 5 दोस्त, और खूब हैमर्स एंड नेल्स से पूरा क्रिएट किया घर. और उसके बाद जो एक्सटीरियर जो आप देखते हैं डेजर्ट के सीन्स हैं वो हमने काफ़ी मतलब रिसर्च करके कि इराक के प्लेन्स वेजिटेशन कैसी लगती है. उसके बाद हम लॉस एंजल्स से 2 घंटे की दूरी पे एक डेजर्ट है वहाँ हमने शूट किया. और बाकी आई थिंक कि इराक जो है इस फिल्म में उसकी साउंड में है, अजानों में है, बाहर जो मार्केट प्लेस में जो उनकी अपीयरेंसेस में आपको बताऊं कि इनमें से कोई इराकी नहीं है. ये जो शुरू में सीन है, जो मार्केट सीन है, देयर ऑल आर्मीनियन एक्स्ट्रास, बट दे हैव द मिडिल ईस्टर्न लुक. बट आई थिंक इराक इज इन द साउंड्स ऑफ द फिल्म. डायलॉग भी कुछ अरबिक में. हाँ, वो हमारे कुछ दोस्त हैं बाप थे, उनसे हमने कुछ अरबिक में कहा कि मार्केट प्लेस में क्या बात होगी. Very clever, I must See, say. sound is the cheap way to create places. That's right. Except the very intro shot is a stock footage shot, which is a 3-minute जो हमने Getty Images से खरीदा, जो बहुत महंगा पड़ा. लेकिन ये बात है कि जब आप एक ओपन बगदाद के स्काईलाइन पे शुरू करते हैं, पर उसके बाद लोग क्वेश्चन नहीं करते कि ये बगदाद है. Because once you cue them in, you hook them in, then you just keep them with the sound. And thankfully, I like to think that we have. लेकिन आपको मुझे लगता है कि you chose a sort of not the wrong format but limited format. जो कुछ आप कहना चाहती थी उसके लिए एक ज्यादा स्पेस चाहिए थी, आपको ज्यादा लेंथ चाहिए थी फिल्म की. I would agree. और ये शॉर्ट फिल्म जो है इसमें आपको पता है कि we would like to know more about the characters, कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनका इंटरेक्शन और होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप हो रहा है उसमें एक इंटेंसिटी आनी चाहिए. तो वो मुझे लगा कि ये फिल्म आपको एक बड़ी लेंथ में बनानी चाहिए. बात आपकी सही है, बिल्कुल बजा है. जो राइटर है उन्होंने एक फीचर फिल्म भी लिखी है इसी सब्जेक्ट पे, और इसका उन्होंने शॉर्ट बनाया. एंड आई थिंक ही वाज वेरी एम्बिशियस. उनको बहुत सी चीजें, अभी तो बहुत इसमें चीजें काटी हैं हमने, अभी तकरीबन 5 पेज स्क्रिप्ट के काटे हैं कि उसमें बहुत सी चीजें देखनी होती हैं. अब लॉट ऑफ फेस्टिवल्स वो 20 मिनट से कम की फिल्म को एक्सेप्ट करते हैं. अब फिल्म को जस्टिस, फिल्म की स्टोरी को जस्टिस करते हुए मुझे 20 मिनट चाहिए थे. ये नहीं कि बस 20 मिनट की बनानी है तो सब कुछ जल्दी जल्दी कर दो. तो अभी तो इसमें काफी लेयर्स हमने हटाए हैं. एंड आई एग्री, इसमें अभी भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो वी कुड हैव एक्सपैंडेड. हम इसको लेंथ इसकी बढ़ा सकते थे डिटेल में, लेकिन टाइम कम था, पैसे कम थे. अच्छा ये बताएं
بتائیں کہ یہ جو سٹوری ہے آپ کی جو لو سٹوری وچ از آئی مین نارمل ایک اس طرح سٹوریز عام ہیں اگر یہ اس کانٹیکس سے نکال کر کسی اور کانٹیکس میں دکھائی جائے تو یو تھنک کہ اس میں کوئی فرق پڑے گا کہ ایک لڑکا ہے ایک No, I فوجی don't ہے think so. I think that Marwa جو ہے ہماری ہی رانجھا رومیو جولیٹ کی کہانی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ عراق کے اس پہ ہے مطلب کہ یہ جو اس لیے بھی مجھے اپیل کی تھی سٹوری کیونکہ گروئنگ اپ ان پاکستان مطلب کہ میں نے اس طرح کی بہت ایک تو دیکھے بھی ہیں فیملیز میں سچویشنز اور سمجھ بھی آتی ہے بھائی باپ جو ہے پروٹیکٹو ہے بچی کے بارے میں گورا بندہ ہے نہیں مگر اس میں انٹرسٹنگ ٹوسٹ یہ ہے نا کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از تھینکنگ دی امیرکنز بٹ ہی از ناٹ allowing his daughter to ٹوسٹ تو ہے لیکن دیکھیں بہت نیچرل بات ہے ڈبل اسٹینڈرڈ سے پوری سوسائٹیز میں آئرونک ہے نا ساری چیز جہاں اپنی بیٹی کی بات آتی ہے وہاں ایک دم سے پروٹیکٹیو تو بن ہی جاتے ہیں تو نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو آئی تھنک اٹس ویری یونیورسل دیٹس دا اپیل آف دا اسٹوری کہ ایسا لو از سچ اے زائٹگائسٹ ایشو جو آپ کہیں بھی کسی سوسائٹی میں کسی ایج میں کسی صدی میں آپ لے جائیں everybody relates to it. ہیر رانجھا کو کوئی نیا ٹوسٹ دیا پھر اس سینس میں آپ کی اس فلم میں نہیں I don't think so in terms of the relationship of the love I would say it's very much a next door story but I think جو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کل عراق کی وار میں اب وہی لوگ کہیں گے نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بم پھٹ رہے ہیں اور آپ کو عشق کی سوچ رہی ہے یہ بھی ہم نے پلیسنگ دیر اگر اس کو ہم پلیس کرتے ہیں اس وار کے کانٹیکس میں عراق کے وار کے کانٹیکس میں تو پھر وہ اس کی سگنیفیکینس بدل جاتی ہے یعنی کہ there should be a change or interpretative change انٹرپریٹیشنز کی اور ہو جائیں گی اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے ذہن میں کوئی تھا کہ میں اس کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کر سکوں ڈیفینیٹلی تھا جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ And did you succeed in it, you think? I think you know فلموں میں جب آڈینسز کے آپ کو ریئیکشنز ملتے ہیں اسی پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک لوگوں کو تو اچھی بھی لگی اور مطلب کہ آئرونک بھی لگا کہ ایک وار میں یہ بھی ہم نے بتانا تھا کہ دیکھیں وار تو چل رہی ہے بم پھٹ رہے ہیں دے آر نارمل پیپل لائک یو اینڈ می with normal problems existing in these wars, existing under the shadow of bombs or under the, you know, the chaos of war. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی یہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے زیادہ بھی ظاہر ہے یہ فلم بنی ہے اور ان کو بھی یہ دکھانا کہ دیکھو عراق یا عراقی سارے کے سارے تمہارے دشمن نہیں ہیں ہیومن فارم میں کامنالٹی ہے کہ پیار عشق محبت family it's a very universal statement so that was another reason that was another basically I guess metaphor to it is that you know we're all the same that we're all the same and war shouldn't alienate two societies completely so basically it's anti-war definitely and you're using the love motive definitely it's yeah definitely I mean there's a beauty کہ مروا اور ڈیون are attracted to each other and there's also the complexity کہ جی ہم اپنے آپ کو اتنا ایک دوسرے سے الگ محسوس کرتے ہیں اس دنیا میں جبکہ وہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ وہ بتایا نا کہ وہ ڈکشنری ان کے لیے لکھتے ہیں جی بالکل تو وہ ایجوکیشن اور یہ سارا انلائٹنمنٹ اور پروگریس آپ نے تو بڑی باتیں دیکھی ہیں اس میں نہیں میرا مقصد ہے کہ نہیں I agree ڈکشنری دینا ایسے ہی ہے نا جیسے انسان کو لفظ سکھانا اور وہ پورا قلم دینا ہاں تو آپ کے خیال میں کہ وہ امریکن جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سویلائزیشن پروگریس لٹریچر ایجوکیشن آئی تھنک کہ جو امریکن ہے ایک تو خیر وہ اور پروٹیکشن تو کر رہا ہے لیکن ایک تو امریکہ کی فارن پالیسی کو کر رہا ہے جو کہ مطلب کہ مائٹ ناٹ بی ویری پازیٹیو بٹ وہ یہ بھی پروجیکٹ کر رہا ہے کہ سارے امریکن بھی وہاں جو ہے ویسے نہیں ہیں تو اس فلم کی جو امریکن رانجھا بھی نکلا بالکل اس فلم میں ہوپ ہے اس فلم میں امید ہے کہ ویسے تو میں خدا کے لیے کو کوٹ کروں جس طرح شان کہتا ہے کہ سارے پاکستانی برے نہیں ہوتے یا سارے امریکن مطلب کیا یہ تو ایک وہ نا سارے تو گرین نہیں ہوتے اور یہ نہیں the point is کہ امید یہ ہے کہ everything is a shade of grey you can't be black and white if you're American you're not necessarily always the enemy ہاں وہ بات آپ صحیح کریں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ گرے ایریا جو تھا did you succeed in interpreting it کہ وہ گرے ایریا آپ کریٹ کر سکتی ہوں Again, I don't know. I'll see. I'm hoping that the audiences think I have. اچھا یہ کتنے دن کی شوٹنگ تھی اور آپ اپنا ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں نا I believe you have been studying in LA. Yes, I have been. I'm an engineer turned filmmaker. My God.
I got my engineering degree from Caltech, so I'm a very big nerd. But I switched to filmmaking. I got my master's from the University of Southern California just this May, and Marwa was a product of a scholarship I got. Good. And ये था हम लोगों के finals खत्म हुए थे 8 दिसंबर को, और 9 से 13 हमने set build किया है, और 14 को हमने shooting शुरू की है, और 19th तक we shot, and then we shot exteriors and we came back and we shot one more day. So I would say 8 days की shoot. Did you work on the story with the writer? Yes. It's a very interesting. We were both in the same writing class, and रमजान का महीना था, जैसे कि अभी चल रहा है, और वो इराक से ही आया था. He was a veteran, इराक का soldier है, और he was very disillusioned with the war, और काफ़ी नाउमीदी उस पे थी कि क्या हम लोग लड़ रहे हैं और ये और वो. तो उसने वापस आके राइटिंग स्कूल, फिल्म स्कूल में स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की. तो हम बात कर रहे थे, और उसका रोज़ा था उस दिन. उसने इराक में रह के रोज़े रखने शुरू कर दिए थे, तो उसको मैं अपने पास लेके गई अपने साथ इफ्तार करने, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग. एंड फिर उसने कहा कि ऐसी ऐसी कोई स्टोरी है. मैंने कहा ऐसी ऐसी कोई स्कॉलरशिप है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो उसमें मैंने अपना पाकिस्तानी बैकग्राउंड लाने की कोशिश की फिल्म में, जो कि मैंने मतलब कि देखा है, फैमिली डायनामिक्स और सारा. तो उस सिलसिले में आई थिंक आई हेल्प्ड हिम डेवलप, बिकॉज उसको दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी. इट्स हिज बेस्ट फ्रेंड्स ट्रू स्टोरी. So it's inspired by that, but he didn't know the Eastern point of view on the story, and I think that's where I came in. But actual true story जो आप बता रही हैं, वो भी इराक की story है? True story में Devin converts to Islam, marries Marwa and takes her to Jordan. तो फिर ट्रू स्टोरी तो आपने बताई नहीं. बताई नहीं. It's inspired. It's not based on a true story. लफ्ज़ का फर्क है. आपने तो ट्रूथ को डिस्टॉर्ट किया कि वो अगर इस्लाम कबूल कर लिया था उसने, तो वो बहुत नहीं, देखना वो फिर सारे मसले हल हो जाने. वो फिर फीचर बन जाते. तो इसलिए हम लोगों ने नहीं, बट ऑल्सो ये भी तो होता है उसमें लाइफ राइट्स बहुत टेक्निकलिटीज हो जाती हैं, आपको लोगों की लेनी होती हैं, एंड वी वांटेड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रू पीपल. So we decided to, since it's a short. Do you think true stories are usually they make good films? Is it important कि कोई truth तो हर वक्त हर बंदे का है ना? You know, see, I think that pretty much every film is in some way a form of truth, because obviously when a writer writes something, तो बहुत सी चीजों से इंस्पायर होकर लिखता है. ठीक है, मगर वो उसकी जो सिलेक्टिविटी है, जिस तरह वो इंटरप्रेट करेगा चीज़, जिस तरह आपने इंटरप्रेट किया है, जाहिर सी बात है अगर आपकी ट्रूथ, ये तो डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं. It's always, you can never ever. हमारे एक प्रोफेसर होते थे कि हिस्ट्री ऑन फिल्म, जो हिस्टोरिक फिल्म्स होती हैं वो भी गलत कहते हैं लोग, क्योंकि जब आप फिल्म कर देते हैं हिस्ट्री को, उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस ले आते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ना, आप एक और मीडियम में उसको लेके जाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, और हिस्ट्री मीडियम ही चेंज हो जाता है ना, कि आप उसको फिल्म के मीडियम में लेके आ रहे हैं, तो जाहिर है उसमें चेंजेस आएंगे, आपकी अपनी पर्सनल सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस आएंगी. ट्रूथ कैन ओनली लास्ट इन इट्स मोमेंट. तो आपके ख्याल में इस पे लिखना चाहिए कि based on true story? इस पे inspired लिखा हुआ है. हमने काफी, इसमें technical terms होते हैं. If you write inspired, then that means कि you are inspired. It's loosely based. If you write based on true events, that means you have the life rights. That means you have the authority from the. So you are inspired. We are inspired by a true story, and it's actually very different, because in real life, Marwa's family dies, and he converts to Islam, and they're actually based in Texas now. The couple. तो नहीं ज़ाहिर है. Do you think this writer can write another story if he doesn't have another Marwa true story? Oh yes, he's so talented. I'm hoping मैं उसको कहती रहती हूँ मेरे लिए एक feature लिखो, मैंने direct करनी है. Mashallah is a very talented person. Good. So you're planning to expand this film or work on? I'm yes, I'm definitely working. I'm working on similar dramas. You know, growing up in a third world country, I think, and seeing so much misery and drama around you, I think काफी natural सी बात होती है कि at least मेरे लिए comedy में कभी approach नहीं कर सकती. मुझे लगता भी नहीं मैं अच्छी होंगी comedy में. तो सारी मेरी scripts जो है वो drama के genre में जा रही हैं. तो मरवा से काफी मिलते जुलते, you know, social issues पे हैं. But I'm trying to start my career with a little bit of a more commercial film, because you know it's very tough in this industry to always make super art house films. So you want to switch over to popular films or commercial? I don't want to switch over to it, but I want to go somewhere in the middle. जिसका आजकल काफी जो है ना commercial independent films बन रही हैं, जिनमें थोड़ा सा ऐसा भी angle होता है कि you know the masses enjoy. ऐसी नहीं कि जब इस रोने धोने वाली फिल्में नहीं सिर्फ बनानी के, but something with a message, but something that's entertaining as well. Good. Something that's a visual feast. Good. Thank you so much. Thank you. All the best. My pleasure.